Hello viewers, welcome back to my channel. In today's video, we are going to see a short story translation in Hindi, Tamil, Telugu and Kannada through English. So before getting into the video, please do subscribe my channel, like and share with your friends and family members, and without fail, press the bell icon to get notified for my upcoming videos. You might have heard a story of golden eggs. So without wasting time, let's have a short recap of this story. Once upon a time, a farmer had a duck which laid golden eggs. Farmer used to get daily an golden egg. He was happy selling the egg and he was earning for his living. But as days were passing, he wanted to become thrice the richer of what he has now. He wanted to get all the golden eggs from the duck. So he asked his wife that he wants to kill the duck and get all the golden eggs from it. And somehow she too agrees with him. Next day, he kills the duck and starts to search for eggs. He could not find any egg. At last, he realized his mistake. He should have felt satisfied with what he had. Greediness always leads to misery. Now let's see this short story translation in Tamil. இது ஒரு குட்டி கதை. இந்த கதையோட பேர் தங்க முட்டை. இதில் முன்னொரு காலத்தில் ஒரு விவசாயி ஒரு வாத்து ஒன்று வளர்த்துட்டு இருந்தார். அந்த வாத்து தினம் ஒரு தங்க முட்டை போட்டுட்டு இருந்தது. அவருக்கு அந்த தங்க முட்டையை தினமும் விற்றுட்டு அதில் வர்ற வருமானத்தில் தினம் அவர் சாப்பாடு அவர் வாழ்க்கை எல்லாமே நல்லபடியாக போயிட்டு இருந்தது. ஆனால் அவருக்கு நாள் போக போக இது திருப்தி அளிக்கலை. அதனால் அவர் நம்ம இப்போ இருக்கிறத விட 3 மடங்கு பணக்காரங்களாகணும்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுக்கிறாரு. இதை போய் அவரோட மனைவிகிட்ட கேட்குறாரு, ஆலோசனை பண்ணுறாரு. அவங்களும் அதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க. மறுநாள் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த வாத்தை கொன்னுடுறாரு. கொன்னுட்டு அதில் முட்டை இருக்கான்னு தேடி பார்க்குறாரு. கடைசியில் அதில் ஒரு முட்டை கூட அவர் கிடைக்கல. பேராசை பெரும் நஷ்டம். So now let's see the translation in Hindi. ये एक समय की बात है. एक किसान के पास सोने का अंडा देने वाला बतख था, जिससे रोज़ाना सोने का अंडा मिलता था. हर दिन सोने के अंडे को बेच के किसान अपना जीवन बिताने लगा. लेकिन किसान को इससे संतृप्ति नहीं थी. किसान को अभी 3 गुना अमीर बनना चाहता था. किसान ने अपने पत्नी से पूछा, क्या हम बतख को मार डालें और सारे सोने अंडे को निकाल दें? तो पत्नी ने भी किसान की बातों से हाँ कर दी और वो भी सहमत हो गई किसान की बातों से. अगले दिन किसान ने सोने के अंडे देने वाले बतख को मार डाला और वो सोने के अंडे को ढूंढने लगा. लेकिन किसान को एक भी सोने का अंडा नहीं मिला. अभी किसान को अपनी गलती का एहसास होने लगा. उसको जो भी उसके पास था उससे संतृप्त होना था. लेकिन किसान लालची बन गया. लालची का फल हमेशा बुरा ही होता है. ये एक छोटी सी कहानी थी सोने का अंडे की. Now let's see the story's translation in Telugu. ఒకానొకప్పుడు ఒక రైతు దగ్గర బంగారు గుడ్డు ఇచ్చే బాతు ఉన్నింది. ఆ బాతు ప్రతిరోజు ఒక బంగారు గుడ్డు ఇచ్చేది. ఈ బంగారు గుడ్డుని అమ్మేసి తన జీవితంని నడుపుతున్నాడు. కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత ఆ రైతుకి ఇంకా పెద్దగా ధనవంతుడు అవ్వాలని ఆశ వచ్చేస్తుంది. తన భార్య దగ్గర పోయి ఆ రైతు అడుగుతాడు, ఆ బాతు కోడిలో ఉన్న మొత్తం బంగారు గుడ్డులని మనము తీసుకొని అమ్మేస్తే మనం ఇంకా పెద్దగా ధనవంతుడు అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి భార్య దగ్గర అడుగుతాడు. దానికి భార్య కూడా సరే అని చెప్పేస్తుంది. మరుసటి రోజు ఆ రైతు ఆ బాతు కోడిని
సంపేస్తాడు. సంపేసి తన కడుపులో గుడ్డులు ఉన్నాయా అని వెతుకుతాడు. కానీ ఒక్క గుడ్డు కూడా, బంగారు గుడ్డు కూడా ఆ రైతుకి దొరకలేదు. ఆ రైతుకి తను చేసిన తప్పు ఏమిటి అనేది తర్వాత అర్థమైంది. ఈ కథ ద్వారా మనం తెలుసుకునే నీతి ఏమిటంటే, మనము అతి ఆశ పడకూడదు. మన దగ్గర ఏముందో దాంతో మనం తృప్తి పడాలి. నౌ లెట్స్ సీ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಬಂಗಾರು ಮೊಟ್ಟೆ. ಈ ಕಥೆಯ ಹೆಸರು ಬಂಗಾರು ಮೊಟ್ಟೆ. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತ ಬಂಗಾರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋ ಒಂದು ಬಾತುಕೋಳಿನ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಬಾತುಕೋಳಿಯಿಂದ ದಿನ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ಮೊಟ್ಟೆ ಆ ರೈತನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಮೊಟ್ಟೆನ ದಿನ ಅದನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ಬಾತುಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮರುದಿನ ತಾನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿನೂ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ. ಮರುದಿನ ಆ ಬಾತುಕೋಳಿನ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಥೆಯ ನೀತಿ ಏನಂದರೆ, ತುಂಬ ಆಸೆ ಪಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆನೋ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿಗೇಡು. Till now we had seen Golden Egg story translation in Tamil, Hindi, Telugu and Kannada through English. I hope my today's session was very much interesting and informative to explore new journey of language learning. Before I end up today's video, as always my kind request would be, please do subscribe my channel, like and share with your friends and family members. I need your full support. Till we catch up in next wonderful video of language learning. As of now, bye-bye.